देखिए, बीजिंग में जो कुछ चल रहा है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का हाल बेहाल है। वो भारत को झुकाने निकले थे, लेकिन अंजाम जो हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है। और इन सब के बीच अब ट्रंप बड़बड़ाने भी लगे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, सोच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। रूसी मीडिया ने तो तस्वीरें जारी करते हुए लिखा है कि महाशक्तियों का ये त्रिकोण डोनाल्ड ट्रंप लाइव देख रहे हैं। देखिए, तस्वीर रशियन मीडिया की तरफ से जारी की गई है, जिसमें आप डोनाल्ड ट्रंप को मोबाइल देखते हुए देख रहे हैं। और मोबाइल के अंदर क्या तस्वीर होगी, इसका चित्रण रशियन मीडिया ने कैसे किया है, जहां प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग को आप हाथ पकड़े बात करते हुए देख रहे हैं। ये SCO की तस्वीर है। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं उन्हें हैरान परेशान कर रही है। और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर टैरिफ की धमकी देते हुए नजर आए, लेकिन इस बार उनका लहजा थोड़ा बदला सा है। सुनिए जरा। Get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now, since I came along, and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. Foolishly, we weren't charging them. So they would send in massive, everything they made, they'd send it in, pour it into our country. Therefore, it wouldn't be made here, which is a negative. But we would not send in anything because they were charging us 100% tariffs and, किम जोंग ने टैरिफ की धमकी देते समय डेविडसन का भी उदाहरण दिया था। क्या कहा था हार्ले डेविडसन के उदाहरण के साथ, सुनिए। I'll give you an example. Harley Davidson couldn't sell into India. There was a 200% tariff on a motorcycle. So what happens? Harley Davidson went to India and built a motorcycle plant. And now they don't have to pay tariff. Same thing as us. So what we're doing is... अब ट्रंप की इस बौखलाहट के पीछे की वजह क्या है? तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस तस्वीर में जो तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, ये देखिए, ये तस्वीर है जिसने ट्रंप की नींद उड़ा दी। आपको याद होगा कि जब बायलैटरल टॉक्स होने वाले थे रशिया और इंडिया के बीच, तो टॉक्स से पहले ही एक ही गाड़ी में गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर पुतिन। और ये मुलाकात से जो बायलैटरल टॉक्स ऑफिशियली होनी थी उससे पहले की तस्वीर है। गाड़ी में सफर लंबा था, जहां तक जाना था, जहां पर टॉक्स होनी थी, तो वहां भी रास्ते में बातचीत हुई है और भारत के जो टाइज थे वो और मजबूत हुए हैं। तो एक तरफ ट्रंप की हालत भारत ने खराब कर रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने भी उन्हें चूना लगा दिया है। शहबाज पुतिन के सामने बैठकर कह रहे हैं कि हम आपसे तेल खरीदना चाहते हैं, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। सुनिए सर। I've been to your country since ages. I've not been there, so I must go to Moscow and refresh my good old memories of my younger days. Your Excellency, I'd like to also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act, I think, in the region. I know, and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine, but we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. और इन सबके बीच ट्रंप से एक पत्रकार ने पूछ लिया कि क्या ट्रंप का समय चला गया है, क्या ट्रंप डेड हो चुके हैं। इस पर ट्रंप ने क्या कहा, वो भी सुनिए। I did numerous news conferences, all successful. They went very well, like this is going very well. And then I didn't do any for 2 days, and they said there must be something wrong with him. Biden wouldn't do them for months. You wouldn't see him, and nobody ever said there was ever anything wrong with him. इन सबके बीच एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जहां ट्रंप के घर से कुछ काले बैग्स को फेंकते हुए देखा गया। ये देखिए तस्वीर, आप देखें। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप अमेरिका को मझधार में फंसाकर भाग तो नहीं जाएंगे? कहीं शहबाज के हाथों चूना लगाए जाने के बाद ट्रंप अमेरिका को चूना तो नहीं लगाना चाहते? देखिए काले बैग्स कैसे गिर रहे हैं। ये तस्वीर बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। अब क्योंकि काले बैग्स गिर रहे थे, ऐसे में काले बैग्स का क्या राज है, इस पर जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। AI.
generator. So actually, you can't open the windows. You know why? They're all heavily armored and bulletproof. So that's a fake video. Well, it's got to be, because I know every window up there. The last place I'd be doing it is that, because there's cameras all over the place, right? Including yours. बेलारूस के राष्ट्रपति ने भी पुतिन के सामने कह दिया कि पुतिन का साथ नहीं छोड़ेंगे। सुनिए। You and China, we are the only European member geographically of the SCO. So to us it's really important. We had a chance to have conversations with all of the presidents, including Prime Minister Modi. We were able to exchange some information. It was a very important talk. But you understand that nobody is going to replace Russia for us. तो बेलारूस के राष्ट्रपति को आपने सुना, और इस बीच आपको बताएं, अब चीन के पत्रकार भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो किया है उसके बाद भारत और चीन और पास आ गए। I think, of course, Russia is the common friends for both China and India. And when I talk to some Russian friends, they always talk, when they mention the China-India relationship, they always want to see that these two countries should not fight against each other or compete with each other. Russian people want to see the China and India, because we are both the Russian people's friends. They want to see these countries cooperate. And this is also what China wants to see, because China never see India as an enemy. Maybe we have some little frictions and conflicts in the past, but just like our president said yesterday when he met with Prime Minister Modi, he said the dragon and elephant should dance together. Yeah, this is the key. दूसरी तरफ अमेरिकी प्रोफेसर खुद कह रहे हैं कि ट्रंप को अर्थशास्त्र ही नहीं आता, उन्हें समझ ही नहीं आता वो क्या कर रहे हैं। That President Donald Trump had a very poor understanding of economics and statecraft. And I realize now that that was wrong. And in fact, President Trump has no understanding of economics and statecraft. That is the only conclusion that I can draw, given the way that he's behaving towards India. Now, there is some case in a sort of good old-fashioned great power competition to have China and the USA go at it against each other. There's some case for Russia and the USA to go at it against each other. It's one of our national hobbies. It's one of their national hobbies. और अमेरिका के प्रोफेसर्स यहाँ तक ही नहीं रुके हैं, वो आगे कह रहे हैं कि ट्रंप को तो मोदी से माफी मांगकर टैरिफ वापस ले लेना चाहिए। I consider it the most crucial 21st century partnership. The partnership between India and the United States will effectively decide what happens between China and Russia. I've put this a different way before, which is to say that India has the deciding vote in the 21st century. If India chooses the US versus China, or if India sits out of any US-China competition, it will effectively decide the outcome. So India is a super, super important player in the 21st century. It's only going to get more powerful. And like I say, I can't for the life of me understand why the President of the United States, in a confrontation with China, in a war, if you think about it, with Russia, would deign to put 50% tariffs on India. So I think the number one thing that we could do of two is remove that 50% tariff and get it down to something far more reasonable. I suggest 0%. And the second thing we can do is apologize.